अब जब बात चल पड़ी है, रेपिटेशंस की बात चल पड़ी है, जब कोई भी साउंड बिगनिंग में रिपीट होगी तो हम उसको एलिट्रेशन कहेंगे, वो एलिट्रेशन हो जाएगी। अब अगर वो वाउल साउंड है, वेदर दैट इज़ एट द बिगनिंग, वेदर दैट इज़ एट द मिडल, देन अगर वो सिर्फ बिगनिंग पे है तो हम कहेंगे कि एलिट्रेटिव इफेक्ट क्रिएट हो रहा है बाय यूजिंग द वावल साउंड, बाय यूजिंग कॉन्सोनेंट्स। बट ये ज़रूरी नहीं है कि पोइट जो है वो बिगनिंग वर्ड से ही वो वावल को वावल साउंड्स को यूज़ करे और वहाँ पे रिपीट करे। ही कैन रिपीट द वावल साउंड विद इन वर्ड्स, विद इन फ्रेजेस एंड विद इन sentences which are close to each other in the text. So identical vowel sounds, when they are going to be repeated, whether they are within the word, within a phrase, then that is what we say, that is assonance. So it creates an echoing effect, and it is used to reinforce the meaning of words or to set the mood set करने के लिए, वर्ड्स के मीनिंग को रीइंफोर्स करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, रेपिटिशन है, स्टार्ट में रेपिटिशन आई तो एलिट्रेशन। अब वही रेपिटिशन वाउल साउंड की है तो हम उसको कहते हैं एसोनेंस। और वो रेपिटिशन जब वाउल साउंड की है तो दैट कैन बी एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, दैट कैन बी इन द मिडल ऑफ द वर्ड, बोथ। ठीक है, जब मिडल में होगी तो हम ये कहेंगे कि दिस इज जस्ट एन एसोनेंस, इट इज़ नॉट क्रिएटिंग एलिट्रेटिव इफेक्ट। अगर वो स्टार्ट पे वो वाउल साउंड रिपीट हो रहा है, देन वी आर सेइंग दैट दिस इज एन एसोनेंस एंड इट इज क्रिएटिंग एन एलिट्रेटिव इफेक्ट. So you can see there are three examples that I have highlighted there. The first one is assonance within a word. Then there is an assonance within a phrase and within a sentence. Cracker jack. A sound repeat हो रही, cracker. Friends until the end. यहाँ पे a sound repeat हो रही. Then try to light the fire. I repeat हो रहा है. ठीक है. So vowel sounds are being repeated. So इसके ज़रिए writer जो है, he wants to emphasize some important words in a phrase or line in order to create a sense of rhythm, in order to enhance the mood and offer a lyrical effect of words and sounds. ठीक है, lyrical effects पैदा करने के लिए. These are just three examples, and that cannot be a part of a poetry. This is not necessary that they are the part of a poetry. So it can happen that they are not a part of poetry. So we are going to take one example from a poem written by William Blake, and you can see there in these lines there is what we see. There is an assonance. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. Then what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? I is repeated. ठीक है, पूरे स्टैंजा के अंदर आए, टाई टाई ब्राई नाई आई दाई. So this is what assonance, the vowel sounds are being repeated, and for that purpose, in order to repeat it, the writer, the poet basically enhances the mood, and he offers a lyrical effect, and he creates a sense of rhythm for the reader. So यहाँ जैसे मैंने पहले बात की कि यूजुअली वी कंफ्यूज एसोनेंस एंड एलिट्रेशन विच each other when we talk about literary devices. They are similar because they rely on the repetition of sounds that are either adjacent or are in close proximity. ठीक है, इस बात पे वो बिल्कुल, जब हम एसोनेंस एंड एलिट्रेशन का कंपैरिजन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि both of them rely on repetition, but this is not necessary. In alliteration, this is not necessary that the word should be vowel, but in assonance, it is necessary that the word being repeated must be a vowel sound. ठीक है, whereas we can see there are two examples there. So यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें नज़र आ जाएंगी, assonance भी. Sometimes there is an assonance as well as alliteration, and sometimes there is an assonance but not alliteration. Even यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे I have mentioned one couplet, so you can see there aren't Agnes Ack, another accounting error. I like to decline and offer a wine to define my style. So in the first one we see this is an assonance, and the second part of a couplet we can see there is
there is an assonance as well. But the first part of a couplet that indicates that this is also having an alliteration. But ये कब alliteration count होगी ये भी याद रखना कि since we have taken the entire stanza, ठीक है, अगर if we are just going to take one line then we can see there is an alliteration. ठीक है, अगर if we just take this one line then there is an alliteration, but since we have taken the entire stanza, so we cannot say there is an alliteration, rather we say there is an assonance. ठीक है, there is an assonance. And then if we take it just one, okay, this is what, this is assonance as well as alliteration. ठीक है, यहाँ पे आ रिपीट हो रहे हैं, और इसमें क्या है, दिस वन में दिस इज जस्ट एन assonance, दिस इज नॉट एन alliteration. सो यहाँ ये बात आपको समझ आ गई होगी कि assonance और alliteration, both of them rely on repetition of a sound, but if that vowel sound is being repeated at the beginning, then it will be assonance as well as alliteration. If that is being repeated in the middle of a word, then this is just an assonance, not an alliteration. ठीक है, alliteration के लिए कैटेगरी क्या है, साउंड की repetition at the beginning. दोनों repetition पे बेस करते हैं, बट at the beginning है तो फिर वो alliteration होगी. beginning में नहीं है तो then it will never become an alliteration. So जब assonance को आप समझते हैं alliteration को, so you can see that repetition is there, and both of them, they create a rhythm in order to enhance the effect of a poem. So that's all about assonance, and I hope that you have understood the idea behind the use of an assonance, as well as you have understood the concept related to assonance. So अगर आपको इसकी समझ नहीं आती, कोई आपको प्रॉब्लम फेस होती है, तो आप लाइव सेशन के दौरान मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं.